Yep, the clock is ticking down on teams to make it to the playoffs. तो बहुत ही रोमांचक गेम होएगा आज। हैदराबाद और राजस्थान का मैच होने वाला है, खेला जाएगा हैदराबाद में। सब कुछ बात करेंगे, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग ऑप्शंस, बिग टिप क्या होगी आपकी, कैसा रहा आपका पिछला गेम, तो सब कुछ बात करेंगे ऑन योर फेवरेट शो cricket.com Fantasy Center. I'm Nikhil Popat. Let's begin the show. It is show time. Let's get going. Cheers. हेलो स्वागत है आपका cricket.com फैंटेसी सेंटर में, होम ऑफ असली फैंटेसी क्रिकेट। बिल्कुल असली फैंटेसी, ओजी फैंटेसी, द वन दैट वी बिगेन विद, जहां पे आपको ना लेना है टॉस का स्ट्रेस, ना लेना है आपको 11 का टेंशन। ऑल यू हैव टू डू इज मेक अ गुड टीम, back your visualization in 7-4 combination, submit your teams 1 hour prior to the deadline, and you can win if you join the right contest at the right time with the right team. So ये सब बोलने के बाद डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत जरूरी है। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क and will be addictive. So please play carefully and invest smartly. So play responsibly. And when you want to play responsibly, of course, you can download cricket.com app from the link in the description. When you download, what will you see? This is what you'll see: a neat and clean interface. On your left, you'll see fixtures. Right, you'll be able to see Fantasy Center. How to get there? Click on research from the left side of this first screen, and then you can pick your game, pick the Fantasy Center. और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? In the Fantasy Center, you'll get everything. Team data, player data, venue, form, matchup, सब कुछ, whatever you need. You can build your own teams, small league, grand league, and of course you have Criclytics teams, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिएगा और लाइक कर दीजिए ताकि आपको भी ये नोटिफिकेशन आता रहे कि भाई इट्स लाइव, लेट्स जॉइन। तो सब्सक्राइब आप होप आपने अब तक ऑलरेडी कर दिया होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है, हैदराबाद राजस्थान। हैदराबाद वांट्स टू गेट इनटू द टॉप 4, राजस्थान विल वांट टू स्टे राइट अप टॉप। तो हर एक विन उनके लिए जरूरी है to just solidify their position. So what are the key game factors for this very game? तो ओवरऑल पहले बात कर लेते हैं। SRH RR हिस्टोरिकली 9-9, बढ़िया, पर at Uppal SRH have won 3 and RR have won 1। और अब पिछले 5 मुकाबले देखेंगे तो जैसे हमने कल देखा था कि पंजाब फेवरेट थी, एंड राइटली सो फॉर देयर फॉर्म एट द वेन्यू। प्लेयर ऑफ द मैचेस देखो एक बार, जॉस बटलर, संजू सैमसन, जॉस बटलर, ग्लेन फिलिप्स। एक बिग टिप तो यहीं पे है, अगर आप देख रहे हो तो क्या शुरू में पैट कमिंस उनको आउट कर पाएगा या टी नटराजन, हु नोस, बट दैट इज समथिंग विल डिस्कस आगे। तो ओवरऑल फेवरेट्स में फिर भी कहूंगा आरआर है ऑन द रिसेंट फॉर्म। यस, वेन्यू एसआरएच को सूट करता है, पर एसआरएच को सूट क्या पिच करेगी, क्योंकि पिछले वाला जो मैच था जहां पे हमने बहुत डिस्कस किया था स्ट्राइकर के बारे में, वापस विल डिस्कस अबाउट इट, बिकॉज अगर स्लो डेक रहा तो आई डोंट थिंक राजस्थान विल माइंड विद देयर बॉलिंग, बट आज SRH will mind। तो बहुत ही क्रूशियल हो जाता है टू गेट द कंडीशंस राइट इन टर्म्स ऑफ असेसिंग दोस। तो एवरेज विनिंग स्कोर 242 मत देखो, 242 एवरेज विनिंग स्कोर, माफ कर दो उसको, छोड़ दो। अदरवाइज एवरेज स्कोर इज 216 व्हिच इज फाइन। बैट फर्स्ट हैज वन ट्वाइस, पीपल हैव ऑप्टेड टू बोल ट्वाइस एज वेल। तो पेस और स्पिन में ज्यादा अंतर ऐसा नहीं है, बट विकेट्स का अंतर रहेगा, क्योंकि पेस अगर ज्यादा बॉलिंग करेगा तो ऑब्वियसली विकेट्स उनको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि बाकी आप एवरेज और स्ट्राइक रेट देखें तो ज्यादा अंतर वहां पे है नहीं। तो लेट्स सी व्हाट द टू टीम्स बैक। वन टीम इज गोइंग टू रिलाई ऑन स्पिन, वन टीम इज गोइंग टू रिलाई ऑन पेस, क्योंकि मार्कंडे पिछला गेम नहीं खेले थे, व्हिच इज क्रेजी। सो आई थिंक इट दे मे बी अनचेंज्ड, बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे ब्रिंग मार्कंडे बैक, कुड बी इन द इंपैक्ट सब एज वेल। तो वॉच आउट फॉर दैट। और आरआर के लिए मुझे लगता है चेंज होना कुछ, देयर इज नो नीड टू चेंज एनीथिंग। पहली बार है कि दोनों वाई इंपैक्ट में होते हैं, वाई जयसवाल बाहर जाता है, वाई चहल अंदर आता है, या वाई चल बाहर जाता है, वाई जयसवाल अंदर आता है। तो दैट इज समथिंग विल ऑब्वियसली सी। फॉर एसआरएच पिछले गेम में अनमोल प्रीत खेले थे पर खेले नहीं थे, बट दैट इज ओके, इट कैन हैपन। और नटराजन यू नो इज द गाय हु कम्स इन विद द बॉल फॉर देम इफ दे आर बैटिंग फर्स्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा, पर उनके बारे में भी बात करेंगे। और क्या है, व्हाट एल्स वी हियर फॉर। तो ओवरऑल की डेटा जैसे मैं हर मैच में बात लेके आ रहा हूँ आपके लिए इन टर्म्स ऑफ पैटर्न्स। कल भी देखो हमने बात करी थी, चेन्नई सुपर किंग्स इन द मिडिल ओवर्स दे आर स्लोइंग डाउन। Exactly what happened yesterday. We discussed about Brar, we discussed about Rahul Chair as well in the big tip. I hope आपने ट्राई किया होगा अपने कॉम्बिनेशंस में। एंड सी इवेंचुअली डेटा बहुत होता है, इट्स अबाउट व्हाट यू आर रीडिंग एंड हाउ यू आर रीडिंग द गेम। तो अपने विजुअलाइजेशन को हमेशा बैक करो। फॉर टुडे
Among batting units in the IPL, highest run rate in the power play, SRH. Highest run rate in the power play, of course, is SRH. Right up top, 11.8, leading the way. और highest run rate in the middle overs is also SRH, which is 9.1. तो ये जो कुछ गेम्स हारे हैं उनका obviously थोड़ा numbers नीचे आया वहां से, but we know how they began the tournament and I'm expecting them to again go back to a very flat surface because batting depth शायद दोनों टीम में उतनी नहीं है, but it will be interesting because flat deck is what suits SRH more than it does RR. तो let's see what the kind of surface that they go ahead with. तो ये तो हो गई बात पावर प्ले की. तो वहां पे बैटिंग करेंगे अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड. दे विल बी अप अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट. तो इफ यू थिंक बोल्ट का पहला ओवर वाला विकेट आएगा तो उसको बैक करना, नहीं तो फिर यू हैव अदर ऑप्शंस टू बैक. उनके बारे में आगे बात करेंगे व्हेन वी मेक द टीम. हेंड्रिक्स क्लासेन इनिंग्स बिल्ट अप बाय वॉल्स कंपैरिजन. तो इस साल आईपीएल में पहले 4 मैच में ही नेवर गॉट आउट इन द फर्स्ट 10 बॉल्स, हेंड्रिक्स क्लासेन. बट लास्ट 5 मैचेस 3 टाइम्स आउट हो गए. तो आई थिंक इट्स प्रॉब्ली टेकन अ रिस्क टू अर्ली, जैसे आपको आरसीबी गेम में भी दिखा था. तो इन द चेन्नई गेम ही वेटेड, गॉट आउट ऑन द 21st बॉल इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो वैसा यू हैव टू फिगर आउट अ वे कि भाई, तो इट वाज 20th बॉल पॉसिबली देन, क्योंकि यू कैन सी द वन डिफरेंस आगे जो बढ़ते जा रहा है वैसे. सो क्या क्या क्लासेन अपना टाइम ले सकते, कैन क्लासेन टेक हिज टाइम बिकॉज ही इज ड्यू अ बिग वन. लेट्स सी. क्लासेन के साथ मैचअप अगर आप देखें तो क्लासेन के साथ चहल का मैचअप है एंड वी नो हाउ दिस गॉन. 41 बॉल्स में 3 बार आउट कर चुका है चहल उनको. स्ट्राइक रेट बहुत ही बढ़िया है. तो देखते हैं हाउ डज क्लासेन एंजॉय फेसिंग आरआर, क्योंकि संजू डेफिनेटली एंजॉयज फेसिंग एसआरएच. एवरेज 49.4 का है, वन ऑफ द साइड्स दैट he's had lot of success, 4 half centuries, 1 century. So definitely not messing around there, Sanju Samson. Or he's back in their India squad, which is great news for him and his fans. And I'm sure he'll be very eager to just stamp his authority कि भाई पहला कीपर मैं होना चाहिए. तो I'm looking forward to see Sanju Samson having a big game today. And again, numbers back him as well. तो चलिए फिर ultimate 11 बनाते हैं. Let's see who makes it to the side and why and in what situation. So in the batting section, we'll discuss about that. But in the wicket-keeping section, I'm keeping all 3. Josh Butler, Sanju Samson, Hennis Klaasen, because this is as obvious as it can get. All 3 keepers are important. Klaasen hasn't had success, but I'm sure he's going to be itching to come good. Butler has 100 against SRH, so unko bhi aap definitely team mein rakhoge. He's not a bad option for captain. Sanju, I'm making him captain for that. He's keeper also. तो 3-4 catches पकड़ ले, 40-50 मार ले, आपका काम हो जाएगा. इसके अलावा अनमोलप्रीत एक विकल्प है आपके लिए, बट शायद ही आप बैक कर पाओगे. स्मॉल लीग टीम में इतना फॉर्म रन बना के आ रहे हैं डोमेस्टिक में, पर डिफरेंट बैटल व्हेन यू प्ले इन द आईपीएल. तो बैटिंग पे आ जाते हैं. ऑल 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल. नाउ यू विल से यू हैव पिक्ड द ओपनर, सो आई एम नॉट पिकिंग द न्यू बॉल बॉलर्स. दैट इज माय लॉजिक देयर. आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड फ्लैट सरफेस, मूवमेंट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बॉल बैट पे आना चाहिए, और अगर स्लो भी है तो भी power play should be the best time to bat. So that is why I'm banking on the top order to come good for both sides. So Travis Head, Abhishek Sharma and Yashasvi Jaiswal. Captaincy, Sanju Samson, straight option. Travis Head, slightly risky option as vice captain because he can get out very early. But who else can you go ahead with? अगर आप very sure हो कि नहीं आरआरए जीतेगी तो go ahead with Sanju Butler. Go ahead with Butler, Jaiswal if you want to. या bowling section से आप किसी को try कर सकते हो. Because I feel SRH will be very, very desperate for a win. I think Travis Head will come good and he's a safer option in that case. So small league में उनको वाइस कैप्टन बना रहा हूँ. इतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि ट्रेविस हेड है. आगे ट्रेविस हेड के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए. एवरी इंडियन फैन नोस द पेन, तो ज्यादा उस पर बात नहीं करेंगे अपन. ऑलराउंडर्स में मैंने एक थोड़ा सरप्राइजिंग पिक रखा है in terms of Vedan Markram. I know a lot of people will not back him, but I think no matter how SRH go with the bat in terms of whether they get a great start or not, Markram is crucial for them. Or if they lose an early wicket, even more so, पिछले game maybe he got a score, may not have come at the right strike rate, but you can't expect everyone to do everything. So that is his role, and I'm expecting him to also start bowling a bit more. I don't know when, but he should. और रियान पराग अगेन, काफी टाइम हो गया रियान पराग का वैसा परफॉर्मेंस आया नहीं है. हिटमैर को तो बैटिंग ही नहीं आई, तो डोंट बी सरप्राइज इफ दिस इज द गेम वेयर यू सी देम बैटिंग, बट फॉर दैट अर्ली कोलैप्स होना चाहिए. तो अपना विजुअलाइजेशन बैक करना, मैं आपको सारे पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ ताकि यू कैन देन टेक अ कॉल. You have Shahbaz Ahmed who you can back because lot of righties in RR, but they'll need Jaiswal to get out. So if Cummins can get Jaiswal out,
Shahbaz Ahmed comes into the game there. And of course, you have Nitesh Reddy, who, if you feel SRS will lose early wickets, Nitish Reddy could be your man in the middle order to be a very good differential there. तो who bowls में, as I said, मैंने नए ball bowlers दोनों टीम से नए लिए हैं. Tina Tanjan, end overs bowler. Sandeep Sharma, yes, he's bowled with a new ball recently, but I'm not expecting him to bowl again. He may. I'm expecting Ashwin to come into the game early, but it's a guess. It's a guess. We don't know how it will work out. It will depend entirely on the conditions. But I'm banking on Yuzi Chahal for middle over wickets and T. Natarajan and Sandeep Sharma for end over wickets. You can take Pat Cummins if you want to. Batting value bhi hai unke saath. You can take Avesh Khan. You can take Trent Bolt. You can take Jaydev Unadkat if you feel the deck is going to be a similar slow deck. So for Jaydev Unadkat, he can go for 45, but he'll take 3 wickets. That is all that matters. The 3 wickets. So Mayank Markande पिछले game में नहीं खेले थे. If he plays, you can pick him. As I said in the WPL as well, the bowling section has a lot of options, but like we saw yesterday, it is the usage. Harshal Patel bowled only 1 over yesterday. You could not have seen that coming. So you have to really back your visualization and try and pick people who you are assured that they will bowl 4. I hope these 3 bowl 4. So that is my ultimate 11 then. 3 keepers, 3 batters, 2 all-rounders, 1 is risky. 3 bowlers you can take and take another bowler if you feel very strongly about it. Trent Bolt is the guy in my substitute players because I think there should be some swing available. But if I'll pick Trent Bolt, eventually I'll drop one of the 2 openers because then it's the only way it makes sense. Because if I have the top 4 and I have Trent Bolt and Sandeep, doesn't make sense. तो अपने विजुअलाइजेशन को वैसे बैक करो और अगर और ऑप्शन चाहिए तो क्रिकेटिक्स की टीम्स आपको मिल जाएंगी ऐप पे. ऐप डाउनलोड करना, आप लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. तो व्हाट डज क्रिकेटिक्स से? सेफ चॉइस क्लासन एंड ट्रैविस है. फेयर शाउट. Top picks, Travis Head and Sanju Samson. Exactly one of our combination. High risk, high reward, Sandeep Sharma, Pat Cummins. Oh, bowlers backing. I love it, but क्या होगा? And high risk, high reward, Avesh Khan and Henrik Klassen. एकदम ही जय माता दी. It has Paul also, it has Abdul Samad. So that is what you have to keep in mind. अगर आप देख रहे हो कि आप bowlers को captain, vice captain बनाओ, तो who are you picking in your side? क्योंकि visualization, the entire team is important. You can't take people who dismiss each other and cancel each other out. You have to take Abdul Samad if you feel Rajasthan will take a lot of wickets because only then can Abdul Samad come on and bat. So, अपने visualization को back करो, Criclytics की team से एक बार देखना, and then if you feel strongly, yes, this combination makes sense, go ahead, pick the team, and of course, invest smartly in your Grand League teams. So, 39 of you watching, before we go to the big tip, एक like कर दो. Thank you so much. We've already cost 64K, so thank you so much to each one of you for tuning in every day for everything that cricket.com puts out. So, thanks for that. Big tip की तरफ चलते हैं. Hopefully the big tip that creates a difference takes a 3 for or a 4 for. My big tip for today is Yuzi Chahal. Most wickets against an opponent में SRH है. 19 मैच में 28 wickets. He's made it to the World Cup squad. I know अब तक World Cup squad के सारे players ने कुछ नहीं करा है, but today could be the day it changes with Sanju Samson and Yuzi Chahal. Could be a great Grand League combination to try out. Chahal captain, Samson vice captain, or even the reverse. So I am banking on Chahal to disrupt that middle order. I know Klassen can score well, but if he doesn't, this is a proper game for Yuzi Chahal. पिछले game wicketless गए थे, which doesn't happen very often. So hopefully today is the day where Yuzi Chahal comes good and takes a 3 for. इसके अलावा Riyan Parag is due for a good knock. Henrik Klassen, as we discussed earlier in this preview, is very, very crucial. And Avesh Khan is bowled very, very well. I expect him to take a couple if he bowls at the right time. So that is that in terms of the big tip, in terms of the data and the tips that I wanted to share with you guys. I'm sure we'll have a few comments. Let's take them and let's discuss what all we have in terms of the comment section. So first comment, Chinmay, thank you so much for tuning in, being a regular. Hope you have already liked, and we've touched 45 again. Thank you, Rohit Sharma. You were spot on with chancing Ruturaj captain, paid off in my season long, as most of them did not have it after 2 good knocks. They expected him to fail. So this is where you often see law of average or number-wise, Ruturaj Gaikwad doesn't have good number against Punjab. But as I keep saying, form से मस्ती नहीं. Form से मस्ती नहीं करना. इसके लिए मैंने संजू को भी captain रखा. It is better to take a risk on a form guy and say that, okay, नहीं चला form में है, it's okay. So that is my logic. Works for some, doesn't work for some. So you should back what works for you. And Baki, I'm sure we have Saravanan in the comments because SRH is playing today, so we'll take his comment as well. फिलहाल के लिए Chinmay asks, will Sanju go exclusive from the start now, knowing World Cup slot is confirmed? Well,
I'm hoping he just bats the same way. He's been very good. Even in the last game, he was very, very good with Dhruv Jurel, giving him good company. So I'm expecting a big knock from him. More so while batting first. It will be great, no, if Sanju scores a century and Chal takes a 3 or 4 or a 4 for. So there you go. I've given you a grand league combination there in itself. So hopefully he'll go big, but I want him to really keep scoring runs because he's batting well, and I don't want the inconsistent bit to come back to discuss. So season long captain and vice captain safe options: Sanju Samson, Yuji Chel, Josh Butler. Any one of them. Yuji Chel is still more risky. If you feel batters will come good, then you can definitely go ahead and do that. In terms of I'm not someone who loves to back batters, but you know how it works out for me. And potentially, I've heard an idea of a meme coming out for my captaincy picks in fantasy, but that's okay. We all keep trying. Saravanan, yes, nice to see you. I knew you'd be here. I think Abhishek will be champ today. Well, I feel so too. In terms of all he has to do is take care of Trent Bolt. एक ट्रेंट बोल्ट का खतरा तो जरूर रहेगा अभिषेक को. Given to Travis said, if they are able to see him off, I think Ashwin will also bowl early. So we saw what happened last game: short ball, high deep cover. Hopefully Pat Cummins has told Abhishek enough that Avesh will try this, Bolt will try this, don't fall for that. So that is something we will see. And Kanika, good to see you here. I hope you have already liked the video. She has, or I'm assuming that's a he or a she, whoever you are. Thank you so much for tuning in. Why is Rinku Singh in reserves? Well, we answered this and a lot more in our preview that we did just minutes. A very raw version of a review of the World Cup squad that India have picked. We've discussed in detail why Rinku, why Shivam, why Samson, why no KL Rahul. Yes, we discussed KL Rahul as well. And it's the last person that you expected to talk about KL Rahul. We talked about him. So do check that video, and 50 of us watching each other. So thank you so much for that half century. Hopefully that's the good luck that we're looking for this game. So thank you so much for tuning in for all this while, and very, very crucial game today. So let's see. I see a bold prediction, and maybe we can wrap the video off on that note, where Saravanan says, bold prediction, RR law of averages come today is what he says. So, well, Saravanan, I know you're an SRS fan and you'll want that to happen, but I don't mind. As long as we win in fantasy, anybody can win. We are, it's that MS Dhoni tweet, no matter which team wins, I am here for my entertainment. Also, fantasy wins. So, thank you so much, everyone, for tuning in. I'll see you tomorrow. Same place, same time, 3 p.m. Cricket.com Fantasy Center. Crucial game coming up tomorrow. But for now, it is Nikhil Popat signing off. See you soon. Take care. Bye-bye.